Hello everyone, welcome back to my channel Life Sciences Tutorial. In today's video, we will discuss about the digestive system of Labiorhita. So firstly, here we have given the diagrammatical representation for the digestive system of Labio. सबसे पहले हम जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं वी हैव टू मेन पार्ट्स अंडर दिस वन वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड another one is the digestive glands associated with the particular system of the labio. So firstly हम यहाँ पे बात करेंगे elementary canal की. So in case of labio, elementary canal is complete. Complete elementary canal का मतलब है we have both openings, we have mouth and anus, so that's why we call it as the complete alimentary canal. We have different parts associated with the alimentary canal. We have mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, intestinal bulb, intestine, and rectum, which is further associated with the external opening called as the anus. So यहाँ पे हम अगर डायग्राम में देखें you can clearly see that this particular highlighted part, this one is the mouth. और इस माउथ के ऊपर आप देखें कि एक स्पेस है और जहाँ पे डॉटेड एरिया से जो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दिस वन इज द अपर लिप एंड हियर वी हैव द लोअर लिप. सो माउथ इज बाउंडेड बाय soft upper lip and lower fleshy lips along with the lips with 4 to 5 rows of sensory papilla will be present in the mouth region. फर्दर ये माउथ जो है आपकी नेक्स्ट बकल कैविटी में ओपन आउट होता है दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये सारा जो है दिस इज द buccal cavity, and under this buccal cavity you can see these vesicle or spherical structures present. These are the buccal papilla. So buccal cavity is a short dorsoventrally compressed cavity. Further in this buccal cavity it is surrounded by mucous membrane lining the buccal cavity and it contains buccal papilla. Now this buccal cavity it opens into the pharynx. Here from this particular point up to this ये सारा आपका आता है pharynx में. And further this pharynx is a dorsoventrally compressed body further divided into two parts. This one is the anterior part. ये सारा आपका anterior part आ जाएगा and this one is the posterior part. In anterior part it is narrower and perforated laterally by gill slits, whereas in posterior part you can see the pharyngeal bone bearing teeth. This is pharynx. इसके साथ में आप देख सकते हैं these are the flap like structure. They are basically the bone bearing teeth. This posterior part of the pharynx it bears closely set of pharyngeal rows of 3 homodont teeth sets on its ventrolateral walls. Then pharyngeal teeth will help to crush the food and this pharynx part it will further open into the esophagus. So next part you can see here this one इस तरीके से और यहाँ पे हमें इस तरीके से lines और folds जो है ये show हो रहे हैं. This particular part this is the esophagus. Comparatively जो हमारी लेबियोफिश है इसमें esophagus small होता है और stomach जो है वो absent होता है. So it is a short narrow tube and esophageal की अगर हम covering की बात करें it is form of the prominent longitudinal folds. You can clearly see here इस तरीके से जो lines show हो रही हैं these are the longitudinal folds formed of the mucus. And in labio pneumatic duct of air bladder opens into the esophagus which further open into the intestinal bulb. And as we said that in labio or in some teleos stomach will be absent, so directly this esophagus it will open into the next part which is the intestinal bulb. So here now we have the intestinal bulb. From this you can see that this entire portion this is the intestinal bulb. इंटेस्टाइनल बल्ब को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो अपर पार्ट जो दिस वन पार्ट दिस इज कॉल्ड एज द कार्डिक पार्ट इंटीरियर वन और यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल बल्ब. Esophagus this further open into this intestinal bulb and it open out with the help of a valve called as the esophageal valve. यहाँ पे जो है इस opening पे एक esophageal valve present होगा which basically prevent the regurgitation of the food and in simply we can say that the backflow of the food. Then this interior broader part is the cardiac part which further open dorsally in the pancreatic and bile duct and a posterior narrow pyloric part without the pyloric ceca. In case of the
fishes, especially in labio, gastric glands will be absent. हमारा जो इंटेस्टाइनल बल्ब वाला पोर्शन है यहाँ पे कोई भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड इनके जो लेयर है, इनकी जो कवरिंग है, इसमें दो तरह के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. यू कैन क्लियरली सी जो हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज द पाइलोरिक पार्ट. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल म्यूकस फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे. Now next, this intestinal bulb, it will further open into the long, elongated and coiled tube. इस तरीके से जो ये coiled part present है, this one is the intestine. So this intestinal bulb, it opens into the further intestine. इस पूरी इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है, इसमें दो तरीके की फोल्डिंग प्रेजेंट होगी. जो ऊपर पार्ट होगा वहां पे आपके ओब्लिक ट्रांसफर फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा इंटेस्टाइन का, वहां पे आपके लॉन्गिट्यूडनल म्यूकस फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो जो भी हमारे लेबियो या जो भी हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वहां पे इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली इलोंगेटेड होती है, मोर लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिजम्स विच हैव द carnivorous diet. Reason, because in case of the herbivorous diet, there is the presence of cellulose which require more time for the digestion. That is why intestine is more longer in case of the labio or in herbivorous animals. Then this is a long and narrow tube. पूरी जो हमारी इंटेस्टाइन है, इसका डायमीटर यूनिफॉर्म रहता है एंड फॉर्म अ नंबर ऑफ कोइल्स. यू कैन सी इस तरीके से कोइल स्ट्रक्चर जो है बनाएगा. Then the mucus lining will form the oblique transverse folds in its anterior region and distinct longitudinal mucus fold in its posterior region. Pyloric ceca, intestinal villi and scroll wall जो है आपके लेबियो के इंटेस्टाइन में एब्सेंट होते हैं. Then further this intestine, it opens into the next part, that is the rectum. Rectum जो है वो टर्मिनल पार्ट होगा, 1 मीटर लॉन्ग होता है, स्लाइटली वाइडर होगा और थिन वॉल होगा. Further, this rectum, it will open into the anus to take out all the material from outside to the body. So this is the first part, that is the alimentary canal. Second one is the digestive glands. So in labio, liver and pancreas will be present along with the gallbladder. Liver basically present as a large and dark brown in color. It is divided into narrow right lobe and broader left lobe, and both the lobes, they are interconnected together anteriorly by connecting median lobes. So here in diagram we can see that here we have the left lobe of the liver, here we have the right lobe, and on posterior side you can see this median lobe of liver which is interconnecting both the lobes. Then next part is the gallbladder. Gallbladder will be thin walled, elongated sac like structure. It lies dorsally between right lobe and the intestinal bulb. You can see here, this one is the intestinal bulb and this one is the right liver lobe. This gallbladder, it will be present in between these two structure, and this is a sac like structure hanging in between these two structure. Then आपका जो गोल ब्लैडर है, यहाँ से एक डक्ट एराइज होगी जिसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, और लीवर से जो है आपकी हिपैटिक डक्ट आएगी. ये जो है आपस में ज्वाइन करके आगे जो है पैनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट होके अपनी जो भी इनकी सिक्रीशंस है उसको इंटेस्टाइनल बल्ब में जो है वो पोर आउट करेंगे. बिकॉज अभी हमने पीछे देखा कि इंटेस्टाइनल बल्ब में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एब्सेंट है, तो जो भी डाइजेशन का काम होगा वो इन्हीं सब ग्लैंड्स की सिक्रीशन की हेल्प के थ्रू होगा. सो दीज hepatic duct, cystic duct and common bile duct and pancreatic duct, they will pour out their secretion directly into the intestinal bulb. So next one is the cystic duct arises from the interior end of gallbladder. It further receives the hepatic duct which is coming from the liver and forms a bile duct which opens the dorsally into the cardiac part of intestinal bulb, as already told you. Then next one is the pancreas. Pancreas is the diffuse scattered form and it is found in spleen and intestinal mesentery. Pancreatic duct, which is enclosed in a common sheath with bile duct, it opens out separately in the intestinal bulb. So these are the digestive glands which are involved or which form the complete digestive system of labio along with the alimentary canal.